Hello my dear students, today is the next lecture of polymers. In previous video हमने बात करी थी with regard to polymers, the introduction as well as classification based on source or origin, and this is the next one, that is classification based on structure. How do we classify polymers as far as structure is concerned? So we have three types of polymers. Number one is linear polymer. Linear polymer. So what are linear polymers? These are the long straight chain polymer. Long straight chain polymers are basically called as linear polymers. They are also called as one-dimensional polymers. One-dimensional polymers. For example, आपके पास ये एक chain है, this is the next chain. So these are the linear polymers. Because of being linear, because of being straight chains, they are closely packed. So these chains are actually closely packed. They are closely packed. Due to this close packing nature, of linear polymers, they have high density, high tensile strength, and they possess high melting and boiling points. So because of being closely packed, linear होने की वजह से ये इनका पैकिंग जो है वो क्लोज पैकिंग होता है. क्लोज पैकिंग की वजह से they have high density, they have high tensile strength, and they have high melting and boiling points. What are the examples? Examples हमारे पास है high density polythene. So high density polythene. पॉलीथीन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी वाला, दूसरा होता है हाई डेंसिटी वाला. जो हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर्स या फिर नाइलॉन. सो ऑल दीज आर बेसिकली लीनियर पॉलीमर्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स. ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं as far as NEET JEE is concerned, or the objective type of questions are concerned if you are doing a beta course. So we have high density polythene, then we have polyvinyl chloride, polyesters, nylon. These are the examples of linear polymers. Linear polymers. The next one is number 2, that is the branched chain polymers. Branched chain polymers. So what are these? These are basically the straight chain polymers having some branches. So we can write here straight chain polymers having some branches. उनको हम नाम देते हैं branched chain polymers. For instance, हमारे पास ऐसे है, this was a straight chain, इसका एक ब्रांच सपोज यहाँ है, दूसरा ब्रांच यहाँ है, एंड वन मोर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ऐसे है. सो लाइक दिस. सो दीज आर कॉल्ड एज ब्रांचेड चेन पॉलीमर्स. सो स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैविंग सम ब्रांचेस आर बेसिकली कॉल्ड एज ब्रांचेड चेन पॉलीमर्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज ब्रांचेस, दे if you want these chains to be closely packed, they won't do so because the branches will not allow the chains to come very closer, so they have not so closely packed. So these are not so closely packed. इनका लेस क्लोज पैकिंग होना, इसकी वजह से जो है
इनका जो डेंसिटी है वो कम है, सो दे हैव लो डेंसिटी, they have low tensile strength, and they have low melting and boiling points. So low tensile strength, low melting and boiling points, low density. It is for the case of branched chain polymers because they have branches. These branches does not let these chains to come very closer, so they are not closely packed. Because of being not so closely packed, they have low densities, low tensile strength and low melting and boiling points. What can be the examples? हमारे पास example है low density polythene. I told you polythene दो किस्म के होते हैं, एक low density वाला, दूसरा high density वाला. So it is LDP, low density polythene. Next example हमारे पास है starch की. Starch is also a branched chain polymer. Next है फिर glycogen. Glycogen is an example of branched chain polymer. So these are the example of branched chain polymers. हमारे पास next है, that is the third one, that is called as cross-linked polymer. Cross-linked polymers. So वो वाले polymers जो बनते हैं when these linear chain polymers cross link each other. So we can write here, it is the cross linking of linear chain polymers results into the formation of cross-linked polymers. इनका दूसरा नाम है network polymers. They are also called as network polymers. So network polymers या cross-linked polymers बनते हैं जब क्रॉस लिंकिंग होती है लीनियर चेन पॉलीमर्स की, that results into this network और क्रॉस लिंक्ड. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऐसा है, दूसरा ये है, तीसरा सपोज ये है. सो इनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग होती है, ये यहाँ से जुड़ता है, ये यहाँ से सपोज जुड़ता है, या फिर यहाँ से जुड़ता है. सो इनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग होती है. इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या है, दे फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर. दिस कॉल्ड एज नेटवर्क पॉलीमर्स और वी कैन से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. सो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स जो होते हैं ये तब बनते हैं व्हेन जो मोनोमेरिक यूनिट्स है उनमें बाई फंक्शनैलिटी हो या ट्राई फंक्शनैलिटी हो. सो in these polymers monomeric units should contain bifunctionality or trifunctionality. मतलब ये कि इनमें फंक्शनल ग्रुप 2 होने चाहिए मोनोमेरिक यूनिट्स में, या 3 होने चाहिए, मींस मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, तब जो है पॉसिबल है क्रॉस लिंकिंग होना. क्रॉस लिंकिंग की वजह से नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है जिनका नाम है नेटवर्क पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. सो इनकी प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी इज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्ड, rigid and brittle. They are expected to be hard, rigid and brittle, these cross-linked polymers. हमारे पास examples है. So we have the example number 1 is bakelite. Bakelite is the example, that is the cross-linked polymer, but what it is actually, it's actually phenol formaldehyde resin. Phenol formaldehyde रेजिन. फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो है आप इनको मिक्स कराते हैं, फिर एक मोनोमेरिक यूनिट बनता है. मोनोमेरिक यूनिट की वजह से फिर उनको पॉलीमराइजेशन होती है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की रेजिन बनता है जिसका नाम है बेकेलाइट. उसी में क्रॉस लिंकिंग होती है. पहले जब स्ट्रेट चेन वाला बंद उसको बोलते हैं नोवालैक,
नोवा लैग फिर क्रॉस लिंकिंग करता है टू फॉर्म द बैकलाइट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट देयर preparation and how they cross link with one another जब हम पढ़ेंगे एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तब हम इन सब का जिक्र करेंगे होपफुली। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दिस वाज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, melamine formaldehyde resin, this is also a cross-linked polymer, and the fourth one can be glyptal. So glyptals जो है they also are basically the network polymers, or we can say cross-linked polymers. These are the examples of these cross-linked polymers. This was the second classification of polymers, that was on the basis of structure. So we were having linear, then branched chain, then there is cross-linked or network polymers. I hope you understand this. I'll come up with more videos hopefully. The third one shall be on the basis of synthesis or on the basis of intermolecular forces. Then after classification we'll switch on to mechanism of polymerization. Till then, take good care of yourselves and do not hesitate to subscribe and share my channel. Thank you very much.